Okay, so let's start with this. So Assalamu alaikum everyone. We are going to start with May-June 2017 paper today. Okay, it's paper 2-2, paper 2 variant 2. So let's begin. All right, so we have some information given here: flights to Sydney, accommodation, insurance cover for up to 20 days. Let's come back to that in a moment. Statement पढ़ते हैं. So a family of 2 adults and 3 children, they traveled to Sydney for a holiday lasting 14 nights. Okay, so it's a holiday that lasts 14 nights in total. Okay, so that's the important thing. There are 2 adults and 3 children. Calculate the lowest total cost of the flight, accommodation, and insurance for the holiday. Okay, now we've got multiple options there. Okay, Acha. Flight, accommodation, and insurance for their holiday. Okay, so what information do we have here? We have information about the flight. Okay, so that's 1199. That is what we're given about the flight. Cost per person is 1199 for adults and children. So it doesn't matter whether it's an adult or a child. सबकी price यहाँ पे एक ही हमारे पास quoted है. एक तो हमारे पास flight की cost है. We have accommodation cost. We have 55 for adults and 40 for children. And then we have insurance cover. Cost per adult is $40. Cost per child is $30. And cost for a family, that is for 2 adults and up to 4 children, that is $155. अच्छा, अब देखिए accommodation और flights के अंदर तो हमारे पास कोई options नहीं है as such. ठीक है, तो वो तो एक ही option है. So we just use them. So for flight, for instance, we have 1199 per person. हम उसमें क्या करते हैं? This is multiply this by 5. We've got 5 total people. ठीक है, so 5 into 1199. ठीक है, अच्छा, accommodation. Cost per adult per night. There are 14 nights in total. So per night cost है 55 for adults. Per night 55 है. एक adult की, 2 adult की कितनी होंगी? That's going to be 2 multiplied by this number. ठीक है? But this is still per night. तो किससे multiply करेंगे इसको 14 nights के लिए? We multiply by 14 as well. Right? So 14 nights हैं और 2 adults हैं. We multiply by 14 and 2 for this. ठीक है? अच्छा. What about children? We have 3 children. And per child, we've got $40 cost. So 3 children की कितनी होगी? 3 times 40. But then it's only per night. So 14 night की कितनी हो जाएगी? 14 multiplied by 3. Okay, so this was relatively straightforward. Flights और accommodation की हमारे पास यहाँ पे total numbers यहाँ से आ जाएंगे. ठीक है? अच्छा, फिर उसने कहा lowest total cost. अब insurance में you got multiple options. You can either buy individual insurances. Adults की आपके पास $40 per adult है. इसमें आप क्या कर सकते हो? Multiply this by 2. आपके पास एक total number आएगा. Children आपके पास 3 हैं. You multiply this by 3. आपके पास यहाँ से एक total number आएगा. ठीक है? So let's evaluate this. 40 into 2. What's that? That's 80. 30 times 3. That is 90. अब अगर वो ये individual buy करते हैं, इसका total क्या बनता है हमारे पास? The total turns out to be 80 plus 90, which is 170. अगर वो अलग-अलग खरीदते हैं insurance, उनका total cost पड़ती है 170. दूसरी option क्या है? They can buy insurance for the whole family. एक family insurance भी है, उसमें वो 2 adults और up to 4 children cover हो जाते हैं. So all of them are covered in that. So $155 आप ये choose कर सकते हो. So which one should you choose? You should go with $155 because that reduces your cost. ठीक है? अब total हमारे पास number क्या हो जाएगा? Let's write them down here. So we have 5 multiplied by 1199. Because total cost is going to be 5 into 1199. That will give you something. 14 into 2 into 55. That will give you something. 14 into 3 into 40. That will give you another number. And then you have finally $155 from here. उसको हम यहाँ पे directly लिख लेते हैं. That's for insurance. That will give you the total income total. Okay. So 5 into 1199. What is that? That is 5995. Okay. 14 into 2 into 55. That is 1540. Okay.
14 into 3 into 40, that is 1680. इन सबको total कर लेंगे, आपके पास total number आ जाएगा. ठीक है, so let's total that. This comes out to be 9370 for me. Okay, so that's the total cost that this family will have to bear for this journey, $9370. Okay, acha. The family hires a car for 14 days and estimates their total mileage will be 750 miles. Okay, but travel itna kar rahe honge, 750 miles travel karna hai unhone. That's their estimate. Now, which company would charge less for this hire and by how much? Okay, so 14 days ke liye hire karni hai. ठीक है, which of these two companies should they go with? Bonus cars है एक option, एक value cars है, which one do they go with? So let's figure out what we get from for each of them. अच्छा, bonus cars में क्या है? 42 per day. It doesn't matter, जितना मर्जी आप travel करो तो उसमें it doesn't matter. So what is going to be the cost for this? It's 42 multiplied by 14. Right, 14 nights की इतनी cost हो जाएगी आपके पास, इसका भी evaluate कर लो. So 42 into 14, that turns out to be 588. अच्छा, value cars पे जाएंगे तो हमें इतनी cost पड़ेगी. Okay, what about value cars now? अच्छा, इसका 20 per day charge है, but then there's also a per mile charge, right? For mileage का अलग से charge करते हैं, कितना travel करते हो, इसलिए उनका per day cost थोड़ी कम है, और फिर उसमें additionally variable cost आ जाती है आपकी distance के ऊपर. So what do we do for this? Again, we've got 14 nights, so that's 20 times 14. ठीक है, एक हमारे पास ये नंबर आ जाएगा. Then there's another charge for that is per mile. तो 0.5 per mile है, 750 माइल का कितना हो जाएगा? 0.5 into 750. ठीक है, we get two numbers from here. 20 into 14, what is that? That is 280. And 0.5 into 750, that is 375 for me. Let's evaluate the total. This turns out to be 655 for me. ठीक है, ये हमारे पास दोनों की कॉस्ट आ गई. कौन सी लोअर है? बोनस कार्स. सो व्हाट डू वी से हियर? बोनस कार्स is better. This company charges less. Bonus cars for their journey, this will be the better option. And by how much? Let's evaluate the difference. 655 minus 588. What is that going to be? 67. Right, so that's $67. They charge less by $67. Okay, so that's what you do here. So that was pretty straightforward, just required some working, but then there isn't really a lot of thinking involved. Just have to understand the situation well. So आपके language skills सही होने चाहिए, आपका situation समझ आ जाए, then you just have to apply that there. Okay, let's have a look at this. The table below shows. अच्छा, any questions on that, by the way? Any questions? Any of the two parts? Clear है ना? काफी आसान था ये. No questions? Okay, let's move on. The table below shows the population given to the nearest 1,000. अच्छा, to the nearest 1,000 दी हुई है. To the nearest 1,000. Let's keep that in mind. Of some countries, okay, so we've got Pakistan, China, South Korea, and Thailand. Their populations are given for 2014 and for 2015. In 2015, how much larger was the population of Pakistan than the population of South Korea? So Pakistan की population कोरिया से कितनी ज्यादा थी? Just do the subtraction, right? So पाकिस्तान और कोरिया को उनको subtract कर दें, आप directly calculator में इसको डालें. It's only one mark. You don't have to show any working. So 185,133,000 minus 49512,000. Okay, so what do I get from this? I get 135,621,000. Okay, यहाँ पे हम डाल देते हैं 135 million. So South Korea's population is lower by 135 point something million. Right? Then, sorry, 2015 का करना. Sorry, I've done the other one. Sorry about that. 2015 का उसने कहा था. I did that for 2014. 15 के numbers use करना है यहाँ पे. ये वाले numbers. So let's do that again. So it's going to be 188,169,000 minus 49765,000. Okay, so that is actually
going to be 138,404,000. That's about 138 million. ठीक है, इसको उसने साइंटिफिक फॉर्म में लिखने को कहा था, वो भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे उसने नहीं कहा, so you don't have to do that. Now, which country had the smallest increase in population between 2014 and 15? Right? सबसे छोटा increase किसका था, सबसे कम increase किसका था? तो बेसिकली आपको ये differences evaluate करने हैं सब, ठीक है, इन सब के differences, इनका difference सबसे कम था, ठीक है. Now you can be a bit smarter about this, ठीक है, कि आप सारे कैलकुलेटर पे डालने की जरूरत नहीं है, आप खुद से थोड़ा सोच लें कि देखिए last 6 numbers are in millions, right? Last 6 numbers are, मतलब ये last 6 numbers से पहले अगर हम इस millions को देखें, ये 5 million से जा रहे हैं 8 million के ऊपर, ये 3 million से जा रहे हैं 2 के ऊपर, लेकिन वो आपकी डिफरेंस बहुत ज्यादा है. आप देखें ओवरऑल इसका डिफरेंस ज्यादा लग रहा है. अगर आप ये बड़े वाले नंबर्स देख लें, चलिए शुरू से देख लें, 185, 188 और 185, ऑलमोस्ट 3 मिलियन का डिफरेंस है, ठीक है. 1393 एंड 1402, तो काफी ज्यादा डिफरेंस बन रहा है, अबाउट 9 मिलियन. दिस इज 49, दिस इज आल्सो 49, ये तो सेम आ रहे हैं यहाँ पे नंबर, सो मिलियंस में सेम फिगर है, ठीक है. 67 एंड 67, यहाँ पे भी मिलियंस में सेम फिगर है. You should only worry about these two. आपको देख के वैसे अंदाजा हो जाना चाहिए पाकिस्तान और चाइना, उसमें फॉल, इनका तो इंक्रीज ज्यादा है, उनमें डिफरेंस ज्यादा है. आप सिर्फ इन दोनों को चेक कर लें, इसको भी आप मेंटली कर सकते हो, बट जस्ट टू वेरीफाई यू शुड डू इट विद अ कैलकुलेटर. इट्स पेपर 2, so just do it using a calculator. आप डिफरेंस कैलकुलेट कर लो. स्मॉलेस्ट इंक्रीज क्या होएगा, दिस नंबर माइनस दिस नंबर. जस्ट पुट दिस इन योर कैलकुलेटर. So let me check. 765,000 minus 512,000. That's 253,000. ये इसमें इतना इंक्रीज है. और थाईलैंड में कितना आएगा? It's going to be 438 minus 223. That is 215,000. ठीक है. So smallest increase किसका आ गया? We say Thailand. आपको उसने इंक्रीज नहीं पूछा, उसने पूछा कौन सी कंट्री का सबसे स्मॉलेस्ट इंक्रीज था. So that was Thailand. You just write Thailand. Okay. Yeah, very good, Haris. That's correct. So आप सारे भी कैलकुलेटर पे डाल सकते हो, but that will take more time. आप थोड़ा सा स्मार्ट होके देखें कि कौन से नंबर्स ज्यादा करीब हैं, सिर्फ उनको चेक कर लें. अच्छा, write the population of South Korea in 2014 in standard form. अच्छा, 14 वाले नंबर, that's this number here, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है, ठीक है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? You need one non-zero number before the decimal. डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए. जीरो के अलावा एक नंबर, जीरो की बजाय कोई और नंबर डेसिमल से पहले होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या पर आएगा डेसिमल? It's going to be right here, 4 और 9 के दरमियान में. So you can write it like this. We can say it's 4.9512. Right? आप पूरे डेसिमल भी लिख सकते हैं, आप 3 significant figures का भी कर सकते हैं. 4.95 भी लिख सकते हैं. You can also write 4.9512 complete, and that's okay. Multiplied by what? How many numbers do we have after decimals now? We've got 7 numbers here. Okay, so we say it's multiplied by 10 raised to power 7. So that's how we convert it to the scientific form. Okay, decimal से पहले एक non-zero number, so 4 के बाद 4 आ गया, बाकी सारे decimals के बाद है. There are 7 numbers after the decimal, so we have 10 raised to power 7 there. Okay, अच्छा. Then it says find the percentage increase in population of Pakistan from 2014 to 2015. So 14 से 15 में पाकिस्तान की कितनी थी? Now remember, हम क्या कहता है percentage change का formula क्या होता है हमेशा? It's new number minus the old number divided by the old number. ठीक है? Multiplied by 100%. Okay. So new minus old यानी जो भी आपका change है, change over the old number. अच्छा. So let's evaluate that. यहाँ पे डिफरेंस उसको ऊपर ही लिख लेते हैं. 188,169,000 minus 185,133,000. इसका जो डिफरेंस आता है हमारे पास, that is 3,036,000. So it's 3,036,000. That's the change. New minus old is 3,036,000 divided by the old number. पुराना वाला नंबर 2014 वाला नंबर क्या था? ओरिजिनल नंबर 184,133. Sorry, 185,133. 185,133. Yeah, 5
Okay, and then multiplied by 100%, and that will give you the percentage change. ठीक है, वो पॉजिटिव आता है तो इंक्रीज होता है, अगर नेगेटिव आ रहा हो तो उसका मतलब होता है वो डिक्रीज है. So what do we get? 185, 133, 000 से divide किया, multiplied by 100, and that gives us 1.6399. So that's the same thing as saying 1.64%. Okay, so that's the percentage increase. Then it says the population of Cambodia in 2015 was 15,677,000. Given that the increase in population from 2014 to 15 was 1.68%, calculate the population of Cambodia in 2014. आपको कौन सा नंबर दिया हुआ है? 2015 का नंबर दिया हुआ है. That is 15677,000. 2014 का नंबर क्या है? You don't know about that. You have to find that. Let's call that x. ठीक है? इसको इंक्रीज किया है आपने कितने से? 1.68% से. इसको इंक्रीज करेंगे 1.68% तो आपके पास ये आ जाना चाहिए. Remember how we used to do it? इसे ओरिजिनल 100% था, कितना इंक्रीज हो गया? 1.68%. कितना बन गया टोटल? It should become 101.68%. ठीक है, तो जो भी ओरिजिनल था, the original was x, उसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है? इस नंबर से. That's the same thing as saying exactly the same thing as 101.68 divided by 100. Right? Decimals के अंदर, फ्रैक्शन के अंदर परसेंटेज आ रहा है, उसका मतलब होता है डिवाइड बाय 100. So we just say x into x multiplied by 101.68 divided by 100. This should give us 15677,000. Okay, यहाँ से आप x की वैल्यू इवैल्यूएट कर लें. Okay, so this is one way to think about this. Another, of course, is आपके पास ओरिजिनल था, उसको आपने कितना इंक्रीज किया? 1.68% से. So that's the same thing as saying 1.68. 1.68 here divided by 100 into x, actually equal 15. And it's getting stuck. 15677,000. Yeah, that's the same thing as saying ऊपर वाला भी वही है और नीचे वाला भी वही है. They're equivalent expressions. ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे? आप x की वैल्यू इवैल्यूएट कर लो. ठीक है, like at 15677,000 multiplied by 100 divided by 101.68, and that gives me 154. x का नंबर मेरे पास आ जाता है 154,17977.97. ये मेरे पास एग्जैक्ट नंबर आ रहा है. ठीक है, ऑफ कोर्स पॉपुलेशन डेसिमल्स में तो हो नहीं सकती. उसने आपको क्या कहा है? गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. जब उसने क्वेश्चन के अंदर ये लिख दिया हो ना, देन इट्स नेसेसरी दैट यू डू इट. ठीक है, अदरवाइज यू विल लूज 1 मार्क फॉर दैट. ठीक है, सो यू हैव टू राइट इट टू 3 significant figures. Okay, 3 significant figures में इसको कैसे लिखेंगे? 3 नॉन जीरो नंबर्स आपको यहाँ पे आने चाहिए शुरू में सिर्फ. So we got 154. ठीक है, और फिर बाकी सारे क्या होंगे? ये 1 था ना आगे, तो वो 0 बन जाएंगे सारे. Where you left it, we have 1 2 3 4 5 zeros after that, right? So this is what we have. This is almost, this is the population of Cambodia in 2014 approximately. Okay. Yes, Minahil, you can do that. You can do that, but I would not recommend that you use it backwards. So this kind of questions, that becomes quite complex, right? So what you're saying is, उसका कर तो सकते हैं बिल्कुल. So you're saying new minus old divided by old into 100%. That equals percentage increase में क्या हुआ था? 1.68%, right? So you can do it. That's perfectly okay. But इसमें थोड़ा सा आपको algebra पर apply करना पड़ेगा. थोड़ा सा new number क्या था? That was 15677,000 minus x divided by x into 100
that's equal to 1.68. इसको आप फिर evaluate कर लें, and that's okay. So you can do it if you make sure that you don't do any mistake here. Okay, so if you're more comfortable with this, that's okay. You can use it, but you have to be careful that you're not doing any careless errors here. Okay, so x को जब multiply करेंगे वहाँ पे 1.68 के साथ multiply होगा, उधर यहाँ पे 100 जो है ये दोनों expressions के साथ multiply हो रहा है, इसके साथ भी और फिर जब यहाँ से आंसर आपके पास आए उसको चेक कर लें, उसको वेरीफाई कर लें कि अच्छा उसको हम इंक्रीज करते हैं by 1.68%, तो हमारे पास वही आ जाता है. Okay, so yes, you can do it like that if you want. Any questions on this? Yes. Acha. Now Rowena spins 2 fair spinners, each numbered 1 to 4. Her score is the value when the numbers on the 2 spinners are multiplied together. The table shows some of Rowena's possible scores. आपको tables में नजर आ रहे हैं. For example, ये number जो है इसमें एक spin में उसका 1 आया था, दूसरे में 2 आया था, so you get 2 here, 1 multiplied by 2. ठीक है, सबसे पहले कहते हैं complete the table of possible scores. So 2 into 3, that's going to be 6, 8. ये multiplication table आपको complete करना है. 3 into 1, that's 3. 3 into 2 is 6. 3 into 3 is 9. 3 into 4 is 12. 4, 1, 4, 8, 12, and 16. Right? So remember what are you doing in each stage, in each cell. For example, ये 12 का क्या मतलब है? 4 का multiply कर रहे हैं हम 3 के साथ. Corresponding numbers जो row और column के अंदर आ रहे हैं उनको multiply करते हैं, आपके पास 12 आ जाता है. So 4 times 3 is equal to 12. Similarly, we're computing all other numbers like this. That was pretty straightforward. Now it says, find the probability that Rowena's score is less than 4. अच्छा, कितना फर्स्ट ने स्पिन किया है? She is spinning 2 fair spinners, या एक दफा स्पिन करिए 2 spinners को, और उसका स्कोर क्या है इनका प्रोडक्ट. ओके, नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट Rowena's score is less than 4. अब टोटल कितने नंबर्स आ रहे हैं आपके पास? The total numbers that you're getting, the total possibilities, the total possible outcomes, they are 16 in total. Total 16 possible outcomes है, तो डिनोमिनेटर 16 होएगा. अब इसको कितनी सेटिस्फाई करती हैं इस कंडीशन को? लेस देन 4 स्कोर. 4 के इक्वल नहीं हो सकता, लेस देन 4 होना चाहिए. So you can just have a look at the numbers. इन तीनों में से कोई हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है. ठीक है, so how many numbers do we have in total? 5 numbers that satisfy that condition. 5 scores that satisfy the condition. So the probability therefore is going to be 5 over 16. So that's the result, 5 over 16. ठीक है, is this clear? Let's move on. Good. Find the probability that, okay. Find the probability that Rowena's score is an even number. Again, we look at the table and we see कि हमारे पास even numbers कौन से आ रहे हैं इसके अंदर. So let's go to the table again. Sorry. Yeah. अच्छा, even numbers कितने हैं? We've got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So out of 16 possibilities, 11 of those scores are even. Okay? So the probability that Rowena's score is an even number, that is just going to be 11 divided by, is it 11 or am I missing anything here? 8, sorry, I missed 8 here. So 3, 9, 3, 1. Yeah, so that's 12 actually. So 12 over 16 because I just realize that because they got the lowest terms में करें, right? देखिए आपको question के statement में अक्सर कुछ चीज़ों का hint मिल जाता है. So I counted 11 there earlier. ठीक है, अब मेरे पास आ रहा था 11 over 16. Now I read this statement. It says give your answer as a fraction in its lowest terms. और इसको simplify कर ही नहीं सकते. So from there I got a hint से हो सकता है मैंने count वहाँ पे गलत कर दिया. So I went back there and realized कि असल में क्या था, 12 over 16 है. So we have 12 over 16 there. इसको हम cancel out कर सकते हैं, so it becomes 3 over 4. So you get 3 over 4 here. The even numbers आपके पास 12 आ रहे थे, just counted them, और आपके पास ये probability आ रही. अच्छा, so there's this other person, Phoebe or Phoebe, however you pronounce that. He says that Rowena's score is more likely to be a square number than a factor of 6.
Is she correct? Now show your working. Okay, so how do we do this? Square number की probability वो कह रही है कि ज्यादा है as compared to the probability of being a factor of 6. Okay, हम क्या कर सकते हैं, दोनों की probabilities निकाल लेते हैं, square number की probability निकालते हैं. So what is this probability? Probability of being a square number. 6 over 16. Okay, so let's have a look there. So probability that it's a square. Let's count the square. ऊपर जाते हैं, squares count कर लेते हैं. Erase previous stuff. अच्छा sorry. Color use कर लेते हैं. अच्छा, let's look at the square numbers. अच्छा, 1 is a square, right? Be careful about that. 1 is the square of 1, right? तो 1 भी एक square है. So then you have 4, that's a square. 4 के बाद 4 और क्या आ रहा है? Yes, we have another 4 here. We have another 4 here, and then we have 9. 9 एक ही है. 9 is only 1. Then we have the next square is 16. So that's here. कितने squares हो गए total? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. So we got 6 squares. So this probability is going to be 6 divided by 16. ठीक है, ये हमारे पास ये probability आ गई. अच्छा, इसको simplify ना करें क्योंकि उसमें ना comparison आसान हो जाएगा. दोनों के अगर 16 same denominator होएगा, so that will make it easier for you to compare the two numbers. अच्छा, then it says factors of 6. Factors of 6 जाके देखते हैं. Factors of 6, 6 भी तो अपना factor है. So we've got 6 here. और कौन सा factors होते हैं इसके? 3. So we've got 3 here and we've got 3 here. Any other 3? No. So we've got these numbers. Then we have 2. 2 is also a factor. So we've got another 1, 2 here, another 2 here. 1 is also a factor. So we've got 1 here as well. ठीक है, 6 के factors आगे सारे. अच्छा, 6 एक और भी है यहाँ पे. So I missed 1 6. You have to be a bit careful here कि आप numbers को miss नहीं कर रहे हो. So 2 6 हैं and 2 3s हैं, 2 2s हैं और एक हमारे पास 1 है. So कितने हो गए total? In total we've got 7 factors of 6 there. 6 के कितने factors हो गए हमारे पास? 7 total वहां पे उस grid के अंदर. So we say the probability of being a factor of 6 is equal to 7 over 16. ठीक है. Now it says क्योंकि उसने कहा था कि it's more likely to be a square than a factor of 6. Now probability of square is actually lower. So is she correct? She is incorrect. She is wrong. She's not correct. Why? Because the probability of square, as we see above, is actually lower than the probability of being a factor of 6. Right? So 6 over 16 is less than 7 over 16. अच्छा, इसको मैंने सिंप्लीफाई इसलिए नहीं किया था क्योंकि अगर ये 3 over 8 होता फिर आपको सोचना पड़ता थोड़ा सा कि अच्छा 3 over 8 क्या इससे बड़ा है क्या इससे नहीं बड़ा. अगर डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है it becomes easier to compare. So that's why अगर आपको कंपैरिजन करना हो तो it's better not to simplify that. You can just leave it as it is. Okay, so she is actually wrong because the probability of being a square is less than the probability of being a factor of 6. Okay, acha, let's move on. Now we've got matrices. This paper looks fairly easy actually abhi tak. But any questions on this? Any questions on this? No? All right, let's move on. Achha, then we have matrices. So we have A matrix, we've got a B matrix, we've got a C matrix. ठीक है, इनके हम ऑर्डर लिख लेते हैं because multiplication में it helps to know the order. ये तो 2 by 2 है, ये भी 2 by 2 है, ये क्या है? Row by column होता है ना, 2 rows है और एक column, right? These are the orders of these matrices. अच्छा, 2b minus 3a तो scalar multiplication और subtraction है. So let's do that. 2 into 5, 3 minus 2 and 1 minus 3 multiplied by 3, 2 minus 4 minus 2. Let's multiply them. अभी जब number multiply होता है हर एक value से multiply हो जाता है. We have 10 and 6 minus 4 and 2. Subtract from that 9, 6 minus 12 and minus 6. ठीक है, अगर आप ये -3 पूरा मल्टीप्लाई करते हो अंदर
आप बाहर प्लस रखोगे। अगर आप सिर्फ 3 मल्टीप्लाई करते हो तो आप बाहर माइनस ही रखोगे। मैंने सिर्फ 3 मल्टीप्लाई किया, मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो माइनस मेरा बाहर वैसे ही रहा है। आप ये भी कर सकते थे, आप इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देते -3 को अंदर, आपका बाहर प्लस आ जाता, राइट? सो इट्स अब एडिशन कर लेते बाद में, so it's the same thing. Okay, now we just subtract them. 10 minus 9 क्या होता है? 10 minus 9 is 1. 6 minus 6, that is 0. Minus 4 minus 12. So that's like -4 plus 12. What's that? That is 8. And then -4 minus 6. Sorry, 2 minus -6. That is 2 plus 6, which also turns out to be 8 here. So our matrix there is 1 0 8 8. All right. Achha. Then it says calculate this matrix, that calculate this product B into C. ठीक है? अब क्या कहते हैं इसका ऑर्डर, अगर आप देखें ना, ऑर्डर क्या है 2 by 2 और दूसरा है 2 by 1. जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स होएगा ना, जो प्रोडक्ट आएगा उनका, उसका ये ऑर्डर होएगा 2 by 1. ठीक है? So that helps you understand कि उसका क्या फॉर्मेट होएगा आपके resultant matrix का. So now we just multiply them B into C. Let's write them down here. 5 minus 2, 3 and 1, and we've got -2 and 1. Let's multiply them. ऊपर वाली रो को इससे multiply कर देते हैं. ठीक है? What do we get? 5 into -2. What's that? That is -10 plus 3. ठीक है? अच्छा, अब नीचे वाली रो को मल्टीप्लाई करते हैं उसी कॉलम के साथ. रिमेंबर 2 rows and 1 column. हमारे पास 2 rows होनी चाहिए थी, यहाँ पे एक रो आ गई, दूसरी रो नीचे आ जाएगी. So -2 into -2, that's 4, and then 1 into 1, that is 1. So that's 4 plus 1. Our matrix क्या आ गया? Our matrix turns out to be -7 and 5. -7 and 5. Okay, so that's our result. All right. So then it says calculate A inverse plus A. Okay. So A inverse आपको निकालना है, उसमें A आपको add कर दो. So let's write that matrix A down here. A matrix क्या था? A matrix is 3 minus 4 and 2 minus 2. Okay, this was the matrix A. अब inverse के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? Inverse is given by 1 over the determinant of A into adjoint of A, right? ये होता है, इसलिए इनवर्स निकालते हैं. आपको दो चीजें चाहिए. You need the determinant and you need this adjoint. Determinant क्या होता है? Determinant is AD minus BC. So अगर आपके पास ये फॉर्मेट हो ABCD, तो it's AD minus BC. ठीक है? इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे. That's 3 into -2. We subtract from that this diagonal numbers. That's 2 into -4. What is the determinant? The determinant turns out to be -6 plus 8, which is 2. Determinant आ गया. दूसरी चीज क्या चाहिए? Adjoint. Adjoint कैसे आपके पास आता है? जो इस diagonal पे numbers होते हैं, इनको हम क्या करते हैं? इनको इंटरचेंज कर लेते हैं, राइट? इनकी पोजीशन स्विच कर लेते हैं. सो -2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा. व्हाट अबाउट द अदर डायगोनल नंबर्स? उनके साइंस चेंज कर देंगे. एग्जैक्टली, सो उनके साइन चेंज कर देंगे. सो 2 -2 हो जाएगा, -4 4 हो जाएगा. दैट्स योर एडजॉइंट. अब आपको सिर्फ क्या करना है, उसके अंदर इनपुट कर देना है. सो दैट्स 1/2, दैट वाज द डिटरमिनेंट, मल्टीप्लाइड बाय -2, 4 and 3. ठीक है? ये आपका A इनवर्स आ गया. अब उसने क्या किया? A इनवर्स में आपको A ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? 1/2 का मंत्र मल्टीप्लाई कर देते हैं. So let's multiply 1/2 inside first. So that's -1 and -1. हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें 1/2 को. 4/2 is going to be 2 and 3/2 is going to be 1.5. ये हमारा आ गया A इनवर्स. ठीक है? अब क्या करेंगे? इसमें A ऐड कर देंगे. So let's add A to it. A क्या था? A was 3, 2, -4 and -2.
इनको ऐड कर दें corresponding numbers को. We get 2 here, -1 plus 2 is 1, 2 and -4 is -2, and 1.5 and -2, that is -0.5. So that is the result. 2, 1, -2 and -0.5. Okay, so -0.5 भी लिख सकते हो आप, -1/2 भी लिख सकते हो, and that's perfectly okay. ठीक है, any issues with this? Any questions? Any questions, anyone? सर बस सबसे पहला वाला पार्ट सर, एक दफा जो लास्ट वाली वर्किंग है सर वो दोबारा बताइएगा. सर मेरा आ रहा है 10810. 10810. So last में क्या है? We've got 2 here. 2 minus -6, that's 2 plus 6. तो 8 आना चाहिए ना यहाँ पे. 2 plus 6. ठीक सर. Okay. Express as a single fraction as simply as possible. This thing आपने क्या करना है, LCM ले लेना है 2x और 5x. अच्छा, इसका LCM भी ले सकते हैं. LCM इसका होगा 10x basically. Okay, LCM is going to be 10 into x because x तो common है ना दोनों के अंदर. LCM is going to be 10x. A lot of people are used to doing this कि वो बस multiply करते हैं दोनों sides पे. That's also fine. You just have to make sure कि आप उसको simplify जरूर करें फिर बाद में. तो आप क्या कर सकते हो, just multiply the two. दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, और उनको इस तरह से एक डिनोमिनेटर को दूसरे के न्यूमरेटर से और दूसरे के डिनोमिनेटर को पहले के न्यूमरेटर से. सो एसेंशियली आप क्या कर रहे होगे, डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 2x into 5x, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 5x को इधर ले गए, 1 से मल्टीप्लाई किया, we get 5x plus 2x into 2, that gives us 4x. ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 9x divided by 10x squared. Now it's important to simplify this. ठीक है, आपको simplify करना पड़ेगा. You get 9 divided by 10x from here. 9 divided by 10x. अच्छा, अब इसको ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, I keep seeing this in papers repeatedly. They write it like this: 9 over 10x. This is going to make you lose marks. This is not correct. आप कोशिश किया करें ये वाला फ्रैक्शन अपने आंसर्स के अंदर अवॉइड करें. इसका क्या मतलब है, अगर आप इसको इस तरह लिखते हो, ये आपने इस तरह लिखा हुआ है, राइट, इसका क्या मतलब होता है, दिस इज बेसिकली 9x over 10, which is incorrect. ठीक है, तो आप ये स्लैश जो है अवॉइड किया करें, बिकॉज इस तरह की अगर मिस्टेक अगर आप कर सकते हो तो ट्राई टू अवॉइड दैट एंड राइट लाइक दिस प्रॉपर्ली, 9 over 10x. ठीक है, अदरवाइज आपको वहां पे मार्क कट जाएगा. Okay, then it says simplify this. Okay, we'll just start to multiply this. 12x minus 8y plus 4 minus 5x minus y का साइन चेंज हो जाएंगे, minus 5x plus 3y minus 1. ठीक है, x और x वाली टर्म 7x आ गया, y और y वाली टर्म minus 8 plus 3, that is minus 5y constants plus 3, so that's 7x minus 5y plus 3. ये हमारे पास इधर आ गया. अच्छा, then it says solve 3x square minus x minus 5 equal to 0, giving your answers correct to 2 decimal places. जब भी वो आपको कहते हैं decimal places तक, तो that means कि उसमें factorization नहीं हो सकती, आपको quadratic formula लगाना पड़ेगा. So let's do that. Yeah, it's a fairly easy paper. Yes, Haris, that's correct. अभी तक तो काफी easy है. So maybe there are some different questions afterwards. Okay, so we've got a equal to 3, b equal to -1, and c equal to -5. ठीक है, let's start the quadratic formula. Minus b, remember आपको brackets के अंदर डालना है सब कुछ, otherwise आपका साइन का एरर हो जाएगा. minus into -1 plus minus square root of -1 का square minus 4 into a, that is 3, into c, that is -5. ठीक है, divided by 2 times 3. इसको simplify कर लें, we get 1 plus minus square root of, आपको ये वर्किंग शो करना जरूरी है. अगर आप डायरेक्टली आंसर लिख दोगे, you will not get marks for that. एग्जामिनर नोज के कैलकुलेटर में आप कर सकते हो डायरेक्टली. सो अगर आप डायरेक्टली आंसर लिख दोगे, उसको मार्क्स नहीं, उसको आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. You have to show this step is very important. ये स्टेप तो जरूर शो करना है, and show at least one more step after this. तो यहाँ पर पास आएगा 1 plus
evaluate this. 1 plus 4 into 5, that's 61. So 1 plus minus square root of 61, and then you have 6 outside. ठीक है, इस स्टेप के बाद फिर आप डायरेक्टली आंसर लिखना चाहते हो लिख दो, लेकिन ये दो स्टेप जरूर शो करें. ठीक है, ये देखें अब क्या आता है आपके पास. 1 possibilities होगी. 1 plus square root of 61 over 6 and 1 minus square root of 61 divided by 6. इसको आप evaluate कर लें आप. So I get 1.47. Okay, and minus 1.14. Minus 1.14. Okay, so these are the results that we get from here. All right, is this clear? Yes. Okay, let's move on. Good. So now we have this graph. शायद इसमें inequalities होंगी कोई. So draw the graph of x plus 2y equals 5. सबसे पहले आपको एक straight line का graph draw करना है. What do you have to do here? Take any 2 points. लेकिन वो 2 points आपके इस graph के अंदर आने चाहिए, right? So 0 से 6 तक ये है और 0 से 6 तक वो है. तो 2 points तो graph के अंदर होने चाहिए. So let's try and see what happens. अगर हम x की value, y की value का 0 लें for instance. Back table. Got x, you got y. x की वैल्यू 0 ट्राई कर लें. 0 के ऊपर y क्या आ जाएगा? 2.5. अच्छा, डेसिमल्स में you should try to avoid. वैसे तो अगर आप कोई और नंबर लेना चाहते हो यहाँ पे तो that might be better. For example अगर 1 ले लें, 1 अगर लेते हैं तो हमारे पास आएगा y की वैल्यू 2 आ जाएगी. ठीक है, x की वैल्यू 1 इनपुट करोगे उसके अंदर. 5 minus 1, that's 4. 4 divided by 2, that gives you 2. तो दूसरी वैल्यू का अगर इसमें y को 0 इनपुट कर दें, y को 0 इनपुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू 5 आ जाएगी. ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट्स आप ले लेना, इस तरह से उनको प्लॉट करना है, इनको ज्वाइन कर देना है. So 1 and 2, that point is here, and 5 and 0, that is here. ठीक है, now we just need to join those 2 points using straight line. Let's do that. हमारे पास स्ट्रेट लाइन. ठीक है, अच्छा वो आपने पूरे ग्राफ को कवर कर देना उस लाइन से, ताकि आपको कुछ भी और उसके बाद करना हो उसको लाइन को यूज करके आप कर सको. So that's your straight line. अच्छा, then it says shade the region defined by these inequalities and label it R. Okay, now let's look at one by one. X less than or equal to 3. X less than or equal to 3. अब ये कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन है, वर्टिकल लाइन, राइट? ये वर्टिकल लाइन. इससे क्या होना है? Less than or equal to, that means you have to be towards the left of this. इसके left पे होना चाहिए. ठीक है. Y less than or equal to 4. ये वाली लाइन y equal to 4 है, इसके आपको नीचे होना चाहिए. लेस देन का मतलब है या लेफ्ट पे या नीचे. कब नीचे होएगा? ओके, देन y less than or equal to 2x. That's this line basically. ये वाली लाइन जो बस रह गई है, ये कोई वाली लाइन है, that is y equal to 2x. ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि लेस देन और इक्वल टू का साइन है, इस लाइन के आपको नीचे होना है. ओके, लाइन के नीचे, that's here, लाइन के एक साइड पे होंगे. Then finally you've got x plus 2y greater than or equal to 5. अब remember, आपने जब ये इक्वालिटी का साइन तब देखना है जब y लेफ्ट पे आ जाए. y को लेफ्ट पे होना चाहिए. ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट दैट y इज ऑन द लेफ्ट साइड. अगर y लेफ्ट पे नहीं है, अब उसको लेफ्ट पे लेकर आओगे पहले, उसके बाद फिर आप इनइक्वालिटी का साइन देखो. ठीक है, y लेफ्ट पे होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, और फिर दरमियान में आपका कोई इनइक्वालिटी का साइन होगा. ठीक है, और राइट साइड पे जो मर्जी हो सकता है. लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव y होना चाहिए. अगर वो नहीं है आपको पहले लेकर आना पड़ेगा. यहाँ पे तो है ऑलरेडी. सो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ रहा है, हमने लाइन ड्रॉ की है, उसके हमें ऊपर होना चाहिए. ठीक है, सो व्हिच रीजन सैटिस्फाइज ऑल ऑफ दिस? इस लाइन के लेफ्ट में, तो दैट्स बेसिकली दिस रीजन इन द मिडिल. ये आपका रीजन है that satisfies all of those inequalities.
Okay, so that's the shaded part. Any problems with this? Any questions? Sorry, should we develop is angle? Right के लिए first वाला use होता है जिसमें inequality वो lesser होती है and left के लिए जिसमें So, पहला काम आपको क्या करना है? पहला काम आपको क्या करना है? Take y to the left side and make it positive. Now, for instance, आपके पास कुछ इस तरह की inequality होती है 2x plus 5 is greater than y. Right? What do you do for this? First of all, take y to the left side. Y left पे होना चाहिए, बाकी सब जो जहां मर्जी हो, doesn't matter. Y left side पे लेकर आना, ठीक है? तो y को हम left पे ले आते हैं. या तो इसका एक तरीका तो ये है, इसको बस रिवर्स कर दो. इससे y इधर आ गया, वो less than बन गया 2x plus 5. You can do it directly like this, ठीक है? और अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? You can take the y term to the left minus y, बाकी वाले टर्म्स को राइट पे ले जाओ बेशक. That gives you minus 2x minus 5. ठीक है? अब y को पॉजिटिव होना चाहिए. हम क्या करते हैं? पूरी इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है. We get y less than or equal to 2x plus 5. इस फॉर्मेट में सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है. अगर वो ऑलरेडी इस फॉर्मेट में नहीं है, you will have to do it. y लेफ्ट साइड पे हो और पॉजिटिव हो, वो यहाँ पे ऑलरेडी हर एक में था, हमें कुछ करना नहीं पड़ा वहां. ठीक है? अगर तो y है ही नहीं तो then you know just deal with x. x जो है वो लेफ्ट पे और पॉजिटिव हो. जब आपने ये फॉर्म कर ली, उसके बाद आपने सिर्फ ये करना है, अगर लेस देन और इक्वल टू का साइन हो या लेस देन का साइन हो, एक में आप फुल सॉलिड लाइन बनाओगे, एक में डॉटेड बनाओगे, ये दोनों के केस में होगा क्या? You will either be on the left or you will be below. So left or below that line. Greater than or equal to का साइन है, greater than का साइन है, you're either towards the right of that or you are above that. The side of language should be above that. ठीक है? इनइक्वालिटी साइंस से इस तरह से आपने वो वाले रीजंस देख लेना है, फिर देखना जो भी कॉमन पार्ट है वो आप शेड कर दो. Is that okay? Yes. Yes. Yes? Yes. Yes, sir. Okay. Let's move on. The triangle PQR has a right angle at P. So triangle PQR has a right angle at P. That's given in the figure. PRQ is 38, RQ is 12. Calculate PQ. Simple trigonometry. जब भी right angle triangle होगी, आप simple trigonometry use कर सकते हो. उसने आपको PQ find करने का कहा है. अब उस angle के opposite side है, so that's your perpendicular. ये आपका perpendicular है या opposite है, और ये hypotenuse है. Perpendicular hypotenuse में कौन सी ratio होती है? Sin 38 is equal to PQ divided by 12. Right? तो PQ क्या हो जाएगा? It's 12 into sine of 38 degrees. क्या evaluate कर लोगे कैलकुलेटर से? देखो क्या आता है. This is 7.39 for me. 7.39 centimeters. Okay. अच्छा. Then it says S is a point. S is a point such that angle PRS is right angle. Achha, let's think about this now. S is a point such that PRS is a right angle. PRS is a right angle. अच्छा, ठीक है. इसका क्या मतलब है? R के ऊपर right angle बनेगा. So that point is going to be somewhere on this side. अच्छा, इस साइड पे भी हो सकता है, दूसरी साइड पे भी हो सकता है. हो सकता है राइट साइड पे हो, यहाँ पे कहीं पे हो सकता है, लेफ्ट साइड पे हो, तो फिर 90 बनेगा. दोनों में से कहीं भी हो सकता है, लेफ्ट पे हो सकता है, राइट पे हो सकता है. अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब. X is the point such that PRS is the right angle and QS is equal to 10 centimeters. Q से S का distance 10 centimeters है, right? So Q से S का distance 10 centimeters है. अच्छा, अभी अगर left पे होता for instance, तो S उसका distance 10 नहीं हो सकता, because इसी ये 12 है यहाँ पे, है ना? तो ये distance वहां तक तो 12 से ज्यादा ही होएगा, साइड पे तो नहीं जा सकते, है तो राइट साइड पे. राइट साइड पे एक तो ये 90 एंगल बन रहा है, ठीक
एक तो 90 एंगल बन रहा है, दूसरा उसने कहा है Q से डिस्टेंस जो है ना दैट इज 10 सेंटीमीटर्स. ओके, अब there could be multiple possibilities here. What could be those possibilities? S जो है हो सकता है वो ऐसी सी लाइन पे कहीं भी हो सकता है, इस लाइन के ऊपर कहीं भी आ सकता है, इस लाइन के ऊपर S कहीं भी आ सकता है. उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसा अभी तक नहीं थी, लेकिन उसने अब दोबारा क्या कहा, Q से S का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है. एक तो हो सकता है कि S जो है यहाँ पे कहीं पे हो, राइट, उसका S यहाँ पे होता है इस तरह से. Another possibility is S जो है वो इस तरह कहीं पे हो, राइट, इधर भी हो सकता है कहीं पे, ये भी 10 में हो सकता है डिस्टेंस, ये भी 10 हो सकता है. सो बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द एंगल QSR. QSR ये एंगल हमें फिगर आउट करना है. ठीक है, ये एंगल हमें फिगर आउट करना है. अच्छा, अब मसला क्या होएगा, you don't have to be able to figure this out, but this is just to help you figure out कि अच्छा ये इस तरह से दो इस तरह से आपके पास पॉइंट्स आ सकते हैं. ठीक है, आप जो है I'm hoping कि आपको डायरेक्टली जो है एक वैल्यू मिल जाएगी. आप S को कहीं भी अज्यूम कर लो, कहीं पे भी होता है, आपको बस ये एंगल फिगर आउट करना है. एक एंगल आ जाएगा, दूसरा आप डायरेक्टली शायद निकाल सकोगे 180 माइनस थीटा करके. दैट्स व्हाट आई एम अज्यूमिंग, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ये हमारे पास थीटा है, ये ट्रायंगल बन गई. ट्रायंगल तो इसी तरह की बनेगी ना, एक एंगल थीटा है यहाँ पे, एक एंगल थीटा है, ठीक है, एक साइड आपको दी हुई है, ये आपको पता है 10 है. दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है. अब आप क्या कर सकते हो, यू कैन फाइंड, you have this angle, this side, and this angle is unknown, लेकिन this angle is 38 degrees. आपको पता है कि क्योंकि ये पूरा 90 था, नीचे वाला एंगल कितना होएगा, that's going to be 52 degrees. The upper angle was 38, so the lower angle therefore is going to be 90 minus 38, which is 52 degrees. So now this is a triangle. This is a triangle in which you have 10 here and you've got 52 degrees here. You've got a pair and you've got one side here. You have to find the opposite side to that, opposite angle to that. आप simply क्या करोगे, आप sin rule apply कर दोगे. You say sin of theta divided by 12 is equal to sin of 52 divided by 10. ठीक है, let's evaluate this. Sin theta is equal to 12 sin 52 divided by 10. That will give you something. Sin theta की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ से 12 into sin of 52 divided by 10. So I'm getting 0.9456 here. You get theta from there. Sin inverse कर लें इसका. That is 71.02 degrees. 71.0 degrees. ये मेरे पास एक एंगल आ गया. ठीक है. Now this is one possible angle, right? अब तो हम साइन रूल लगाया, हम दूसरी भी ट्रायंगल बनाई होती है यहाँ पे, let's say this triangle. तो दूसरी में पहले तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, वो भी तो हो सकती थी. उस पे भी हम हमारा एग्जैक्टली वही रूल लगता, साइन रूल, राइट? एक साइड है, उसका ऑपोजिट एंगल है, दूसरी साइड है, उसका ऑपोजिट एंगल फिगर आउट करना है. दूसरा एंगल कहाँ से निकालेंगे? हाउ डू यू फिगर द अदर एंगल? एनी आइडिया? एक पॉसिबल एंगल तुमने निकाल लिया, दैट्स 71 डिग्रीज. व्हाट अबाउट द अदर? 71. Sorry? So 180 minus 71, 109. But why do you do that? सर ताकि जो उसके बन रहा होता है, जैसे 71 इनसाइड है तो वो एक्सटीरियर एंगल जिसका बन रहा होता है वही होता है ना उसका. Yes, but यहाँ पे तो उसने कहा था sin थीटा ये आ रहा है, हमने कैलकुलेटर से निकाला, थीटा की वैल्यू हमारे पास 71 आ गई. 180 minus 71 क्यों किया अभी हमने, वो कहाँ से आ गया? सर ये आप ही बता दें. So remember that identity, sin of 180 minus theta is equal to sin theta. आप A levels में जाके देखोगे, ये कैलकुलेटर पे ना आपके पास सिर्फ एक वैल्यू आ सकती है, कैलकुलेटर सारी वैल्यूज नहीं दे सकता आपको. sin थीटा की ये वाली वैल्यू बहुत सारे एंगल्स पे होती है, राइट? देयर आर इनफिनिटली मेनी एंगल्स जिसके ऊपर sin की ये वैल्यू होती है. अब कैलकुलेटर आपको सिर्फ एक वैल्यू दे सकता है, आपको 71 दे देता है. ठीक है, आपने एटलीस्ट ये रूल पढ़ा हुआ है वो लेवल्स के अंदर, कोई भी दो एंगल्स हो, उनका अगर सम 180 है
तो उनका साइन सेम आता है, राइट? अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 130 डिग्रीज है और 50 डिग्रीज है, इन दोनों का साइन सेम आएगा। आप कैलकुलेट पर ट्राई भी कर सकते हो। कोई भी दो एंगल्स इनका सम जो है वो 180 है, so let's say 60 degrees and 120 degrees, इन दोनों के साइन सेम होंगे। 75 degrees and 105 degrees, इन दोनों के साइन सेम होंगे। Any two angles when they're summed up, if the sum turns out to be 180, उन दोनों के साइन जो हैं वो सेम आते हैं, ठीक है? तो अगर ये साइन की वैल्यू है 0.9456, अगर 71 डिग्रीज पे ये आ रहा है, तो the other possible angle, the obtuse angle would be 180 minus this. तुमका सम 180 है तो दूसरा एंगल निकालने के लिए क्या करें? 180 minus साइन नहीं आ रहा होगा, that is 1, right? सर उसका भी साइन जो है सर यही आता है सेम 0.9। Exactly, उसका भी साइन आप चेक करोगे वो यही आएगा, ठीक है? ठीक ठीक। That's basically the reason. लेकिन आपको क्या करना होगा अभी at O levels, you just need to remember कि आपके पास अगर आपको कैलकुलेटर हमेशा एक्यूट एंगल देता है, ठीक है? अगर आपको उससे कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्ट्यूज एंगल फिगर आउट करना हो, जस्ट सब्ट्रैक्ट 180 में से आप उसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे और आपके पास वो दूसरा एंगल भी आ जाएगा। ऑलराइट, इज दिस ओके? एनी इश्यूज विद दिस? नो सर, क्लियर। अच्छा, how many questions do we have in total? We have around 11 or 12. Okay, we have 12 questions. Let's do one more today, then we can do the rest tomorrow. Okay, so this is a sequences question, right? So that's also something that we have to discuss in the next couple of weeks, that whole topic. But let's have a look at this. So the diagram shows patterns made from crosses and circles. Crosses or circles से हमारा ये pattern बन रहा है. Draw pattern 5 above. अच्छा, pattern 1 है, pattern 2 है, pattern 3 है, and so on. How do we draw the next pattern? अब देखें क्या हो रहा है, हर next के ऊपर आपके पास एक कॉलम और ऐड हो जाता है। पहले 2 थे, ये तीसरा ऐड हो गया। अभी 4 थे टोटल, 4 कॉलम थे, अब 5 कॉलम्स हो जाएंगे। आपने क्या करना है, पहले तो इसी को रिपीट कर देना। पहले वही वाला रिपीट होता है, पिछला वाला is repeated every time. लास्ट वाला नेक्स्ट एज इट इज आ जाता है, उसके अंदर फिर एक और हम ऐड कर देते हैं। So what do we do? We have cross, circle, cross, circle, cross. उसके ऊपर हम बनाना चाहते हैं cross and cross. Extend it further. Then we extend it more. And then finally we have this pattern. Okay. हम एक और column ऐड कर रहे हैं and it looks like this. And this is pattern number 5. पहले वाली 4 जो लाइंस थी, पहले वाली 4 जो कॉलम्स थे, वो हमने वहां से कॉपी कर लिया पिछले वाले से। ये तो वही आ रहा है पिछले वाला, ठीक है? थोड़ा सा छोटे बनाए, इसलिए आपको शायद लग रहा हो कि कम है, बट ये वही वाला पैटर्न है जो लेफ्ट पे है। But then the fifth pattern has this additional column added to that. ठीक है, additional vertical line add हो गई है, that's the pattern number 5. So now the table shows the number of crosses and circles in each pattern. Complete the table. So it says complete this table. Okay. अब इसमें आपको sequences किस तरह के पता होने चाहिए? We will discuss that, in later on as well. एक तो आपको linear sequence का पता होना चाहिए, एक तो आप देखोगे difference constant आ रहा हो दोनों के अंदर, right? Difference किस तरह से constant आ रहा हो? For example, पहला वाला है, difference सब में 1 आ रहा है, right? That's called a linear pattern. ठीक है? फिर कुछ पैटर्न्स होते हैं जहां पे आपके पास सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट आता है। सो फॉर इंस्टेंस जब आपको नीचे वाला पैटर्न नजर आ रहा है, इसमें सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट है, आप एक दफा डिफरेंस कैलकुलेट करो इसका, 1 3 का डिफरेंस इज 2, you have 3, this difference is 4,
अब इनका डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करो 2 और 3 का 1, 3 और 4 का 1, नेक्स्ट का करोगे तो 1, सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट आते हैं. दिस इज द अदर टाइप ऑफ सीक्वेंस दैट वी नीड टू नो अबाउट. ठीक है, बट खैर वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल लेटर. अभी हम सिर्फ इसको करते हैं. सो व्हाट डू वी हैव? वी हैव 1, 3, 6, 10. So just see what is happening. 2 ऐड हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है, फिर 4 ऐड हो रहा है. नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 5 ऐड हो जाना चाहिए, है ना? 15 सर. 15 हो जाएगा. नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 6 ऐड हो जाना चाहिए. 21. Right, so that's your pattern. You can also think of it this way, and that's another way that you will find, very often that vertically आपने देखना है कोई चीजें add या subtract होके आपको कुछ मिल रहा होगा. So basically यहाँ पे you could think of it this way. आप 1 में क्या add करते हो? 1 में आप ये 2 add कर रहे हो, you get 3. 3 में you add 3, you get 6. 6 में you add 4, you get 10. 10 में you add 5, you get 15. 15 में you add 6, you get 21. Right? So इस तरह से पैटर्न देखना आपको नजर आ रहा है. ऊपर वाले नंबर में ऐड करते हैं पिछला वाला नंबर and you get the next number. Right? अच्छा, let's look at the next one. नीचे क्या हो रहा है? Number of circles. इसमें भी again 0 में क्या हो रहा है? आप ये भी कर सकते हो. The total number is given. नीचे total number given है. आपने number of crosses तो निकाल लिए हैं. नीचे वाले में से इसको माइनस कर दोगे, आपके पास सर्कल्स आ जाएंगे. That's one way to think about this. Right? 25 में से 15 माइनस किया, you get 10. 36 में से 21 माइनस किया, you get 15 there. Another possibility is again आप इसमें देख लो कि difference 1 है, difference 2 है, difference 3 है, next difference 4 होना चाहिए, next difference 5 होना चाहिए. ठीक है? There are multiple ways of looking at the same thing. ठीक है, आपने टेबल कंप्लीट कर दिया. अच्छा. Now it says find an expression in terms of n for the total number of crosses and circles in pattern n. जो total number of circles, crosses and circles हैं, वो आपने figure out करनी है. अब जब कुछ common patterns हैं, इनका आपको idea होना चाहिए. आप ये देखें numbers, does that remind you of something? 1, 4. सर ये स्क्वायर पैटर्न होता है. Sorry, क्या? सर ये स्क्वायर वाला होता है ना सर, जैसे कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर. Exactly. देखिए सारे square numbers हैं ना ये. So ये सारे perfect squares हैं. 1, 4, 9, 16, 25, 36. Right? You should know that. ये 1 का square है, 2 का square है, 3 का square है, 4 का square है, and so on. Right? So essentially आपने क्या करना है? n की terms में इन numbers को represent करना है. अब ऊपर n है, ये जब 1 था ऊपर, नीचे 1 आ रहा था. ऊपर 2 था, नीचे 4 आ रहा है. यानी 2 का square 4, 3 का square 9. तो ये पैटर्न क्या बन जाएगा आपके पास in terms of n? Nth term is going to be given by n का square. Whatever is the n, जो भी n की वैल्यू होती है उसको हम स्क्वायर कर देते हैं. We get that number at the bottom, the total number of crosses. ठीक है? अच्छा. Now it says an expression in terms of n for the number of crosses in pattern n is this. ठीक है? अब जो nth पैटर्न है उसमें जो नंबर ऑफ क्रॉसेस हैं they're given by this. वो कह रहे हैं how many crosses are there in pattern 30, right? तो पैटर्न n के अंदर इतने हैं, पैटर्न 30 में कितने होंगे? आप उस n की जगह 30 इनपुट कर दो. You have 1/2 into 30 का square plus 1/2 into 30, right? Exactly. n की जगह पे 30 इनपुट कर दो. Now you can just evaluate this from a calculator and see what you get. So it's 900 divided by 2 plus 465. 465. So that is 465. ठीक है? ये हमारे पास इधर आ गया. Let's move on. Show that the number of circles in pattern n is this. देखिए हमारे पास कुछ information already है. We know the total number of circles and crosses and circles, that is n square. उसने आपको बता दिया number of crosses का फॉर्मूला क्या है? That is half n square plus half n. Number of circles कैसे आएंगे फिर? Number of circles कैसे आएंगे? We know the total number of. सर अगर इसका हम एक फॉर्मूला लगा लेंगे. a plus n minus 1 into d plus 1/2 n minus 1 1/2 n minus 1 and c. 2 into common difference. Common difference.
सॉरी दोबारा बताएं, a plus n minus 1 into d। हाँ जी ये एंड देन उसको प्लस कर देना है 1/2 n-1 into n-2 into कॉमन डिफरेंस c। ओके चलें, आपने कॉमन अगर डिफरेंस अगर आपने वो याद तो किया हुआ है, if you want to do that sure, but that's not required। उसके बगैर आपके सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, वो आपको जरूरी नहीं है, वो that's not part of the एक syllabus दूसरा as मेथड such। बता दें तो आप। It's only 1 mark, it's only 1 mark। एक मार्क के लिए that's a lot of effort, but of course if you don't find another way, आपको नहीं recognize कर सकते उस टाइम पे, तो yes that's a backup, वो आप कर लो, ठीक है, सही है। लेकिन आप देखिए इसने क्या क्या नंबर ऑफ सर्कल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, यू ऑलरेडी नो द टोटल नंबर ऑफ क्रॉसेस इन सर्कल्स, टोटल नंबर क्या है n स्क्वायर। यू ऑलरेडी नो द नंबर ऑफ क्रॉसेस कितने हैं, हाफ n स्क्वायर प्लस हाफ n। अब सर्कल्स कैसे आएंगे, टोटल में से उसको माइनस कर दें, टोटल में से क्रॉसेस माइनस कर देंगे, आपको सर्कल्स आ जाएंगे। दैट्स जस्ट n स्क्वायर माइनस दिस नंबर ऑफ n क्रॉसेस, over 2 दैट्स हाफ n स्क्वायर प्लस हाफ n। इसको इवैल्यूएट कर लें, ये पास क्या आ जाएगा, इट विल बी हाफ n स्क्वायर माइनस हाफ n, दैट्स इट, राइट। तो आपको वो क्वेश्चन के अंदर से आप किस तरह से फिगर आउट कर सकते होगे। यस इस पर थोड़ा सोचना पड़ेगा कभी कभी, तो अगर आपसे वो उस टाइम पे नहीं फिगर आउट होता तो देन दैट इज अ बैकअप कि अच्छा क्वाड्रेटिक जो आपके पास होते हैं सीक्वेंसेस, उनका जो फॉर्मूला आप अप्लाई करना चाहते हो, यू कैन यूज दैट्स फाइन, बट दैट्स अ बैकअप। you should first look for a direct way of doing that, because ये 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन होएगा, वो फिर आपकी बहुत ज्यादा एफर्ट लग जाएगी उसके ऊपर, ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, sir. yes sir The number of crosses in pattern M is equal to 5 times M। Find the value of M। अच्छा, अब पैटर्न N का तो हमें पता था क्या था, पैटर्न N का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ क्रॉसेस का फॉर्मूला क्या है, हाफ n स्क्वायर प्लस हाफ n। उसका जो nth टर्म का फॉर्मूला है हाफ n स्क्वायर प्लस हाफ n, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, पैटर्न m, n की जगह m इनपुट कर दें, उसके जो नंबर ऑफ क्रॉसेस कितने होंगे, हाफ m स्क्वायर प्लस हाफ n। नाउ दिस इज नाउ इट्स टेलिंग अस दैट्स एक्चुअली इक्वल टू 5m। जो नंबर ऑफ क्रॉसेस है हमारे पास कितने आ रहे हैं, ये वो कह रहे हैं कि 5m है एक्चुअली, उसको इक्वेट कर देंगे 5m के सर साथ। ये m पता कैसे चला सर, ये अच्छा ये क्रॉसेस का पैटर्न है, ठीक है सर। क्रॉसेस का पैटर्न उसने दिया हुआ है, क्रॉसेस इन पैटर्न m, तो पैटर्न नंबर जो m होगा उसमें नंबर ऑफ क्रॉसेस वो कितने हैं, ये हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है, n की जगह बस m डाल दिया, राइट। वो कह रहे हैं दैट्स एक्चुअली इक्वल टू 5m, we say that's equal to 5m and we got an equation here। now we just solve this equation, we have m square plus m equal to 10m, that gives us m square minus 9m equal to 0, ठीक है, m कॉमन लिया, m minus 9 is equal to 0, either m is equal to 0 or m is equal to 9, ठीक है। अब पैटर्न नंबर 0 तो है नहीं हमारे पास, कोई स्टार्ट ही 1 से हो रहा है, राइट, पैटर्न 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 तो नहीं हो सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल, इसलिए द वैल्यू ऑफ m is therefore going to be 9 there। okay, is that clear? yes sir इसका पेपर इजी है काफी ज्यादा। Okay, so ये एक्चुअली हम थोड़ा सा पीछे चले गए 2017 के ऊपर। सो मई जून 17 तक ना आपके पास चॉइस होती थी सेक्शन बी के अंदर, अभी देखेंगे इसमें से 5 में से आपको 4 क्वेश्चंस करने होते थे, और इसमें जनरली होता यह था कि सेक्शन ए यूज्ड टू बी रिलेटिवली इजियर और सेक्शन बी में भी सारे मुश्किल क्वेश्चंस होते थे। अब सेक्शन बी में जाएंगे अभी तो आपको पता चलेगा कि वहां पे यू विल फाइंड सम रिलेटिवली मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, right? At least relatively more difficult. It still doesn't look very difficult, but yeah. सर तो कल हम ये पेपर पूरा कंप्लीट करेंगे एंड 2016 का अक्टूबर नवंबर करेंगे ना। कल इसको खत्म करने के बाद ये 2016 का अक्टूबर नवंबर, यस। कल तो हम सिर्फ ये कंप्लीट करेंगे, वो फिर नेक्स्ट वीक 2016 का स्टार्ट करेंगे। Why not 0? Yes, Because पैटर्न नंबर की बात हो रही है ना, पैटर्न नंबर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1,
पैटर्न 1 से स्टार्ट करें ना, पैटर्न 0 तो है ही नहीं यहाँ पे, पैटर्न 0 मतलब पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? सो दैट वुड नॉट मेक सेंस. पैटर्न, द पैटर्न नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है. इट हैज टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर. नेगेटिव या 0 तो नहीं हो सकता ना, दैट वुड नॉट मेक सेंस. पैटर्न नंबर 0 doesn't make sense, right? Okay, so Okay, sir. that's it for today. So- I'll see you tomorrow, inshallah. I will confirm the time. ठीक है, 12 बजे के आसपास शायद होगा इंशाल्लाह, but I will confirm it. ठीक है सर जी. सर अब्दुल्ला पूछ रहा है ए स्टार सर कितने नंबर पे आएगा? ये एक्चुअली वेरी करता है हर दफा. सो जनरली इट्स अराउंड 85-86%. लेकिन अब इस दफा इट्स स्पेशल एग्जाम, और वो भी थोड़ा सा एडजस्ट भी करेंगे थ्रेशोल्ड को, क्योंकि बाकी जो लोगों के बाकी कंट्रीज में जिनको एक्सपेक्टेड ग्रेड्स मिले हैं उनसे एक तरह से इक्विवेलेंट करने के लिए they will adjust it downwards a bit, right? That's what they generally do. So let's hope, let's see क्या होता है. So it's going to be maybe something around 82-83 शायद इसके आसपास हो कहीं पे, but that's just a guess. थ्रेशोल्ड आपका जब पेपर होगा उसके बाद ही पता चलेगा उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, और क्योंकि पाकिस्तानीज के लिए सिर्फ, तो पाकिस्तानीज आपके बाकी जो है वो कैसे परफॉर्म करते हैं उस पर डिपेंड करेगा. ओके ओके सर. ऑलराइट. अल्लाह हाफ़िज़ सर. Okay, so I'll see you tomorrow then. Allah Hafiz. Take care.